भौतिक लोक भी है और आध्यात्मिक लोक भी है। 75% of the kingdom of God is the spiritual world, and 25% is the material world. भगवान की सृष्टि में 75% वैकुंठ धाम है, 25% भौतिक धाम है। And less than 10% of the created living beings, that means the jivas, are in the material world. More than 90% of the living beings, jivas, are in the spiritual world. अगर आप सारे जीवों की संख्या लेंगे तो 90%, 90% वैकुंठ धाम में है और खाली केवल 10%। That means we are the minorities. हम माइनॉरिटी हैं। There is no overpopulation in the universe. ब्रह्मांड में और पॉपुलेशन नहीं है। The purpose of human form of life is to go back to the spiritual world. हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम वापस जाना। Somehow or other, it says that we are here in the material world because we want to be happy, separate from Lord Krishna. हम मृत्यु लोक में हैं क्योंकि हम भगवान के बिना सुखी होना चाहते हैं। And the Supreme Lord created the material world for those who wish to fulfill that desire. तो भगवान ने भौतिक लोक उन लोगों के लिए बनाया जो भगवान से अलग होकर सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। And in the material world, there's a stamp. So you go to the post office, then the postman will put a stamp, accepted. That means it's genuine now that we receive. So the material world, there is a stamp. Dukalayam is hospital. जैसे पोस्ट ऑफिस में जाते हैं एक स्टैम्प मार देता है, उसी तरह भौतिक लोक में स्टैम्प क्या है? दुखालयम अशाश्वता। Full of miseries and life is temporary. दुख से भरा हुआ और क्षणिक जीवन। There is no place in the material creation that one can be fully satisfied or be happy. भौतिक सृष्टि में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आदमी संतुष्ट और खुश हो सकता है। Because the nature of the soul is to pleasure-seeking entity. They're always looking for pleasure or happiness. जीवा का स्वभाव है आनंद को ढूंढना। Always want to desire to be happy. हमेशा सुख को ढूंढता रहता है। Unfortunately, because we are spirit soul, the jivas, we are fragmental parts and parcels of the Supreme Lord. We cannot find that kind of happiness that adapts especially compatible with the spirit soul. क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम ऐसा सुख नहीं ढूंढ पाते जो हमारे लिए नेचुरल हो, कंपैटिबल हो। हम संततवश गलत तरह से सुख को ढूंढ रहे हैं। It's like if you put the fish out of the water, you can give everything to the fish, but the fish will not be happy. अगर आप मछली को पानी से निकाल के जमीन में रख देंगे, आप कुछ भी मछली को दे दीजिए, मछली कभी खुश नहीं हो सकती। So the fish has to go back to the water, the proper habitat or place of residence for the fish, in the water. मछली को पानी में वापस जाना है। So similarly, as jivas, pure, says the Bhagavad Gita, that the soul is eternal, it doesn't die at the time of death, it continues on. You cannot cut into pieces, you cannot burn by fire, you cannot wither by the wind, and it will take another form after death. भगवद गीता में हमको ज्ञान दिया है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, कुछ भी उसका विकार नहीं किया जा सकता। Our goal in this human form of life is not to take birth again, to go back to the spiritual world where we are at home. हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भौतिक लोक में दोबारा जन्म नहीं लेना और भगवत धाम वापस चला जाना।
There is a saying in English, there is no place like home. इंग्लिश में एक saying है कि घर के जैसा कोई जगह नहीं होता। Temporarily your home is Mangalore. अभी आपका घर मैंगलोर और बाकी जगह है। But before this lifetime, before this life, you belong to a different country or a different place, not even in this planet. It could be in a different planetary system. इस जन्म के पहले हम कहाँ थे मालूम नहीं, किस ब्रह्मांड में, किस प्लैनेट में, किस योनि में, हमको कुछ ज्ञान नहीं। This Vrindavan where we are right now is a replica. It's exactly not different than the Patmos planet in the spiritual world, the Loc Registrations. ये जो वृंदावन अभी आप जो हैं, ये भगवत धाम में गोलोक उसी का रेप्लिका है। This Goloka Vrindavan says compared to a lotus flower. वृंदावन को एक कमल के फूल के से बराबर तुलना करी जाती है। And Lord Krishna is a supreme personality of Godhead. He resides there along with his unlimited associates, and he does not have any job to do, 9-to-5 job. कृष्ण जी वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में रहते हैं और उधर अपने अनगिनत भक्तों के साथ रहते हैं और उनके पास कोई ऑफिस, कॉलेज, स्कूल कोई काम नहीं। He only enjoys, he only always be playing with his coward boys, coward boyfriends, and be with his coward girlfriends. कृष्ण जी हमेशा रास में, हमेशा आनंद में रहते हैं, अपने गोपास के साथ, गोपिया के साथ उनसे आनंद करते हैं। You're not, is okay? You need some water? Okay, maybe you can lie down. Lie down. Oh, no, he just got a cramp. Yeah, so you can straighten up your feet. See, this is the material world. देखा भौतिक लोग ऐसा है, full of miseries. चार तरह के दर्द। In the spiritual world, it's only enjoying. वैकुंठ धाम में तो खाली आनंद है। And it says that 5,000 years ago, Lord Krishna appeared here in the same very place where we are right now. 5,000 साल पहले कृष्ण जी इसी जगह जहाँ पे आप अभी हैं, इसी वृंदावन में प्रकट हुए थे। He took birth 5,000 years ago, and in this area, actually it is called Raman Reti. कृष्ण जी इस जगह को रमन रेती बोलते हैं। Our temple is located to Raman Reti, in this area is Raman Reti. That means silvery sand. रमन रेती मतलब सिल्वरी सैंड, और कृष्ण जी इसी जगह पे खेलते थे। There is another Raman Reti in Gokul. एक और रमन रेती है गोकुल में, where the sand is very soft like Johnson baby powder. एक और रमन रेती है गोकुल में, जहाँ आप जाएंगे वहाँ सैंड बहुत सॉफ्ट है। You see, this place is the spiritual world. ये जो जगह है ये वैकुंठ धाम है। This is not part of the planet Earth. ये पृथ्वी का भाग नहीं है। Well, geographically we're part of UP, we're part of India, we're part of planet Earth, but no. There's a different energy here. This is part of the energy that's not different than the spiritual world. ज्योग्राफी के हिसाब से हम सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का भाग है, भारत का भाग है, लेकिन नहीं, ये वैकुंठ का भाग है। Those whose heart are pure. What is the meaning of pure heart? जिसका हृदय पवित्र है, अभी पवित्र का क्या मतलब होता है? That means no lust, no anger, no greed, no madness, no illusion, and no envy. जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नहीं है, उस हृदय को पवित्र माना जाता है। The Lord resides within our hearts.
भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। Wherever the Lord resides, that is Vrindavan. तो जहाँ भी लोग भगवान रहते हैं वो तो वृंदावन है। So there is a place Vrindavan, and also Krishna within your heart, that is also Vrindavan. तो जगह वृंदावन है और आप सबके हृदय में भी वृंदावन है। But why is it that we are not feeling Krishna? He is invisible. Krishna is present, but he is invisible. We cannot see. कृष्ण जी हमारे हृदय में हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। Just like right now, it says that Krishna is here, but only those who are pure in their hearts, they can still see Krishna performing his leela. वृंदावन में कृष्ण जी की लीला अभी भी चल रही है, लेकिन क्योंकि हमारा हृदय अपवित्र है, इसलिए हमारे लिए वो अप्रकट है, हम लोग देख नहीं पा रहे। कृष्ण की लीला वृंदावन में हो रही है, अभी भी सारी लीला चल रही है, लेकिन हम हृदय पवित्र ना होने के कारण देख नहीं पा रहे। There is a process how we can develop the eyes to see Lord Krishna. तो उसका एक तरीका है कैसे हम अपनी दृष्टि बना सकते हैं भगवान को देखने के लिए। See, our main business in human form of life is to cleanse our heart so that we'll be able to see the pastimes of Lord Krishna. हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए इतना हृदय को पवित्र कर दें कि कृष्ण की लीला हमारे आँख के सामने प्रकट हो जाए। Right now we cannot see Krishna with our eyes. हमारी भौतिक इंद्रियों से कृष्ण को दर्शन नहीं कर सकते। It's like if I take off my eyeglasses, your figures or you're blurred. I'm not be able to see what you look like. अगर हम चश्मे को निकाल लें तो सब कुछ फिर ब्लर दिखने लगता है। I need to use eyeglasses to see you. हमको चश्मा चाहिए आपको देखने के लिए। So similarly, here in Vrindavan there is a thin film of Maya. वृंदावन में एक माया का this energy of the Supreme Lord that prevents us to see Lord Krishna. माया एक भगवान की शक्ति है जो हमको भगवान को देखने से रोकती है। Maharaj, this is spiritual world. All I see is like so many people, so many rickshaws, so many tall, high buildings. How can this be Vrindavan? How can this be spiritual world? महाराज, हमको तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। यहाँ बिल्डिंग है, घर है, लोग हैं। ये क्या वृंदावन नाम बोल रही है, वैकुंठ धाम दिख तो नहीं रहा ना? Because again, we can only see Krishna right now through our ears. अभी हम कृष्ण को अपने कानों से देख सकते हैं। By hearing from the right source, especially from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and other Vedic literatures. अभी जो वैदिक लिटरेचर्स है, हमारे भगवद गीता, भागवतम, उससे सुन के भगवान को देख सकते हैं। We have to hear these scriptures from the right source. ये जो शास्त्र को करेक्ट सोर्स से, करेक्ट जगह से सुनना चाहिए, करेक्ट व्यक्ति से सुनना चाहिए। It says there in the Bhagavad Gita that this knowledge can burn hips and hips, lifetimes after lifetimes of sinful reactions. It will purify our heart if we read, understand and apply the knowledge to ourselves every day. अगर इस ज्ञान को हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो हम पवित्र होकर भगवान को देख सकते हैं। When you come to Vrindavan, every step that you walk is like you're traveling all the holy places in the universe. वृंदावन में एक एक पग लेने में आप ब्रह्मांड के सारे तीर्थों को कवर कर रहे हैं। Especially when you see the dust in Vrindavan. जो वृंदावन जब आप धूल देखते हैं। I was reading just few hours ago that in Vrindavan, Krishna doesn't wear shoes. No chapel. वृंदावन में कृष्ण जी कोई चप्पल और जूते नहीं पहनते। The first day when Lord Krishna
grown up that he is eligible now to take the big cows, because at the beginning as a young boy he was just given the responsibility for the young cows to be taken care of. शुरू में कृष्ण जी जब छोटे थे उनको खाली बछड़ों को ध्यान रखने को बोला गया था। उसके बाद जो पहला दिन आया जब उनको गाय को ध्यान रखने को दिया गया। Not really taking care of, they're just like playing around with the cows. मतलब उनके साथ खेलना। But when he grew up a little bit, he grew up. The first day is called Gopastami. उस पहले दिन को हम गोपाष्टमी बोलते हैं, जिससे कृष्ण जी बछड़ों से के बाद उनको गाय का ध्यान रखने को। It's one of the festivals during Kartik. You've heard of Gopastami? ये फेस्टिवल कार्तिक के समय आता है। Gopastami also is the day when also Srimati Radharani will be dressed as a Gopa. ये एक ऐसा दिन है जिस दिन राधा रानी को भी गोपा की तरह अलंकार किया जाता है। So on that day, Mother Yasoda was thinking, oh, if my Lama goes without any shoes, then his feet will be maybe pierced by thorns or small pebbles. It will be very, very painful for him. तो माँ यशोदा पहले दिन सोच रही थी, अगर मेरा कृष्ण जी बिना शूज चप्पल के अगर जाएगा तो वृंदावन में जो आपके कंकड़ होते हैं उससे उनके पैर में चोट आ जाएगी। So let me give a pair of shoes, and also the sun will be so hot, it will be unbearable. Maybe burn his skin. So let me give also an umbrella. तो इसलिए माँ यशोदा ने उनको जूते दिए और धूप इतनी थी इसलिए उनको एक अम्ब्रेला भी दिया। Then when they are being offered to Lord Krishna, Kannada says, no, ma'am. If you are giving me a pair of shoes, you must also give to 900,000 cows a pair of shoes. तो कृष्ण जी बोले अगर मेरे को जूते पहनाओगे तो 9 लाख हमारी भी गाय उनको भी जूते पहनाने पड़ेंगे। Not pair of shoes, 2 pairs of shoes because 4 legs. और गाय के लिए तो 4 चाहिए। And 1 umbrella? No, you must give them also umbrellas because it's hot. तो मेरे लिए अम्ब्रेला चाहिए, तो गाय को भी अम्ब्रेला चाहिए, उनके लिए भी गर्मी है। So it says that actually each and every Gopas, cowherd boyfriends of Lord Krishna, has hundreds and thousands of cows. And in those days, the road is so wide because when they all go to pasture the cows and the cows, if you have a narrow road like what we have right now, it's not possible. You have really wide roads to have the calves and the cows go pass through. अभी सोचिए कृष्ण के पास ही नंद महाराज के पास ही 9 लाख गाय थी, तो सब जो ग्वाले थे ऐसे अपने पिताजी की लाखों गाय ले जा रहे थे, तो रोड भी थोड़ी इतनी पतली नहीं थी जैसे अभी थी, वाइड थी। So Krishna doesn't have any shoes. So what happens is that when he walked through the sand, the earth honored Lord Krishna's lotus imprints. The feet imprints, lotus feet of Lord Krishna. Because under the soul of Lord Krishna's feet, there are many markings. तो कृष्ण जी के चरण के नीचे तरह तरह के चिन्ह होते हैं। तो कृष्ण जो बिना जूते चप्पल के चले इधर वृंदावन में, तो पृथ्वी पे वो मार्ग आ गया। So the cowherd boys, the cows, the monkeys, the animals, they don't touch the imprint of Lord Krishna's lotus feet. जितनी भी गाय हैं, जितने गोपा हैं, गोपी हैं, वो कृष्ण के पदचिन्ह को कभी नहीं छूते। Planet Earth considered that as ornaments, the greatest ornaments. पृथ्वी भूदेवी को एक बहुत बड़ा ऑर्नामेंट, आभूषण की तरह लगा जो कृष्ण के पदचिन्ह उसमें है। So in Vrindavan,
There are 3 items that can give you Krishna prem immediately. वृंदावन में 3 चीज हैं जो आपको शीघ्र ही कृष्ण प्रेम दे सकती है। What are they? क्या है वो? Yamuna, Brajaraj, and Govardhan, and Giri Govardhan. Vrindavan is the place where all your desires will be fulfilled. वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। Very good, yes. But you must be careful what you're going to desire here. लेकिन आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा क्या इच्छा कर रहे हैं। Because most of us are still in the material platform. अभी हमारा मानसिकता अभी भी भौतिक है। So you have to choose the highest desire possible. तो सबसे बड़ी इच्छा को आपको सोचना चाहिए। If you go to a king and the king says, whatever you desire, I will give you whatever you desire. I will fulfill it. Then you just ask, oh my dear king, I just want handful of ashes. आप राजा के पास गए, राजा ने बोला आपको जो चाहिए मैं देता हूँ। आपने बोला थोड़ा राख देता हूँ। And the king will say, you fool, I can give you a kingdom. तो राजा क्या बोलेगा, मूर्ख, तेरे को मैं राज्य दे सकता हूँ, क्या मांग रहा है राख? So are you only asking a handful of ashes? और हम तो खाली कुछ राख मांग रहे हैं। So if you're going to be here and you are here, you have to ask. Let's say you're given a chance, only one desire, the utmost, the highest desire. You don't tell us what it is. तो आपको सोचना चाहिए कि आपके पास सबसे बड़ा कौन सी इच्छा है वृंदावन में। You can ask Giri Govardhan. आप गिरी गोवर्धन को पूछ सकते हैं। You can ask Yamuna Devi. आप यमुना माँ को पूछ सकते हैं। And you can ask Brajaraj. आप ब्रजराज को पूछ सकते हैं। And if you're fortunate enough to find like one speck of dust that touched Lord Krishna's lotus feet, immediately you're in Braja praying. और ब्रज का धूलि का एक भी कण आपको अगर मिल गया तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। So search for it if you can. If you're fortunate enough to find that one speck that touched Lord Krishna's lotus feet. तो इधर कृष्ण जी की लीला चल रही है और कृष्ण के चरण की जो धूलि का एक भी स्पेक आपको मिल गया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। Now as Kali Yuga progresses, Yamuna will disappear. जैसे no more Yamuna. कलयुग जैसे चलते रहेगा, यमुना भी अदृश्य हो जाएगा। 5,000 years ago, the widest part of Yamuna is 8 miles long. 5000 साल पहले यमुना का जो तो एक तट से दूसरा तट था 8 मील था। You know what's 8 miles long? That's quite far. Maybe from Chatikara to here, maybe much more. आपको 8 माइल का डिस्टेंस समझ आ रहा है, बहुत बड़ा होता है। 8 times 1.6. 8 times 1.6 आपके करीब 11-12 किलोमीटर। It's like 13 kilometers. 13 Yeah, it's quite far. And now Yamuna, if you go to Kesika, sometimes I've seen during summertime, Yamuna is so shallow, people will walk. अभी यमुना इतना छोटा हो गया है, समर टाइम में तो हम लोग पैदल क्रॉस कर सकते हैं। But it says that you're going to go to Yamuna, you're going to show them where is Yamuna. Are you going to Yamuna already? We are taking tomorrow. Tomorrow. It says there that even if you go there and the breeze touching the Yamuna water touch your body, again, thousands and thousands and thousands of lifetimes of karma has been washed away. एक हवा यमुना की भाप लेके आती है, अगर आपके शरीर को छू दे तो हजारों जन्म के कर्म धुल जाते हैं।
This is Yamuna. You can pray to Yamuna to the best of your desire, whatever that may be. तो आपका जो भी हृदय में इच्छा है यमुना को पुकार सकते हैं. And Giriraj also is sinking the size of one mustard seed every day. जो गिरिराज गोवर्धन है वो भी छोटा होता चला जा रहा है और हर दिन एक मस्टर्ड सीड का जो साइज होता है नीचे चला जाता है. Many yugas ago, Govardhan Hill is 25 kilometers in height. बहुत पहले कितने युग पहले में गोवर्धन का जो हाइट था 25 किलोमीटर था. Taller than the Himalayas. हिमालय से भी बड़ा. Giriraj is the king of mountains. गिरिराज वो पहाड़ों का राजा है. Right? Giriraj, king of the mountains. But somehow or other, he was cursed by a sadhu, Pulasya Muni. Because the story goes that many yugas ago, पुलुस मुनि का एक श्राप है, बहुत बड़ा स्टोरी है. King Drona, he is the father of Giriraj. The Pulasya Muni is traveling all over the universe, and he somehow ended up in the place of Simaladweep. And he became attracted with Giriraj, because Giriraj is full of vegetation, trees and plants and waterfalls and caves and so many things, fruits, full of them. पुलुस मुनि भ्रमण कर रहे थे, उनको गोवर्धन बहुत अच्छा लगा. उसके वहाँ झरने देख के, वहाँ की वेजिटेशन देख के, उसकी सुंदरता देख के बहुत आकर्षित हुए. So now Pulasya Muni, he was living in Bihar. पुलुस मुनि बिहार में रहते थे. And his desert life. So now he asked King Drona, the father of Giriraj, I want to have your son, because if I bring him to my ashram, then I will have a nice place for meditation. तो पुलुस मुनि ने गिरिराज के पिताजी द्रोण को बोला कि मैं उसको बिहार ले जाना चाहता हूँ. वहाँ मेरे लिए भगवान का ध्यान करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए. Giriraj doesn't want to go, but if he will not go, then his father will be cursed. गिरिराज को जाने का मन नहीं था, लेकिन उसको जाना पड़ा नहीं क्योंकि पुलिस मुनि उनके पिताजी को नहीं तो श्राप दे देंगे. So Giriraj says, okay, I will go with you, but there is one condition. गिरिराज ने बोला मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है. Pulasya Muni says, what is it? पुलिस मुनि ने बोला कि बताओ आपका क्या शर्त है. My condition is that wherever you will put me, I will remain there. You will not be able to move me anymore. अगर मेरे को तुम कहीं पे भी जमीन में रखोगे, फिर मैं हिलूंगा नहीं. ये मेरा कंडीशन. So how am I going to carry you? तो पुलिस मुनि ने बोला तुमको लेके से जाऊंगा. And Giriraj says, don't worry, you just open your arm like this, and I will go on top. तो गिरिराज ने बोला अपना हाथ ऐसे करना, मैं उस पे आ जाऊंगा. So he was able to carry Giriraj, but then they were passing by in Vrindavan. तो पुलिस मुनि गिरिराज को ले जा रहे थे, वो वृंदावन होके चल रहे थे. And Giriraj liked Vrindavan, and he knew also that Krishna will come here. गिरिराज को मालूम था कृष्ण की यहाँ पे लीला होती है. He will appear here. And somehow, all of a sudden, call of nature is there. So, Pulasya Muni has to tend to the call of nature. तो पुलिस मुनि को कॉल ऑफ नेचर आया, उनको जाना पड़ा. और so he put Giriraj where Giriraj is right now. उसने वहाँ वो गिरिराज को वहीं पे रखा जहाँ है. Are you going there also? मुझे going forth to find out. Okay. So now, after he was relieved by the call of nature, he's trying to live Giriraj. तो अपने he finished his call of nature and he came to Govardhan. Right?
And Giriraj will not move. गिरिराज बोला मैं नहीं चलूंगा. Just what is this? Time to go. पुलिस बोलते चलो भाई. Giriraj says, remember our agreement? Wherever you put me, I will remain there. I will not move anymore. तो गिरिराज ने बोला तो शर्ता भूल गए, जहाँ पे मेरे को रखोगे मैं तो उधर से नहीं चलूंगा. Okay, if you're not coming with me, I'll curse you to sink the size of one mustard seed everywhere. तो गिरिराज को पुलिस ने श्राप दिया, नहीं आते ऐसे बदतमीज, अब तुम हर दिन एक मस्टर्ड सीड के साइज छोटे होते चले जाओ. Now, you may think that one mustard seed is very small. It is small. But try to line up 365 of them. So that is the length that in 1 year, Giriraj is sinking. तो आपको लगेगा कि मस्टर्ड सीड तो बहुत छोटा होता है. ठीक है, लगाओ एक पेपर में 365 को रख दो, तो उतना जो हाइट है गिरिराज पर कम होता रहता है हर साल. Which means that from 25 kilometers, now the topmost highest peak of Giriraj right now is only 80 feet. तो पहले तो 25 किलोमीटर था, अभी बचा 80 फीट. As Kali Yuga progresses, Giriraj will be like flat. जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा, गिरिराज भी अदृश्य हो जाएगा. Yamuna will be gone. It will be like desert here. यमुना भी अदृश्य हो जाएगी, एक रेगिस्तान की तरह दिखेगा. So the only thing that will remain is Vrajara. एक ही चीज बचेगा, ब्रजराज. So what they do, the pilgrims, you can also do it if you wish. You take little Brajaraj wherever you go and collect them, and then when you go home, you will have Vrindavan with you. तो एक काम वो करते हैं, वृंदावन की धूली थोड़ा थोड़ा अपने पास अलग जगह जहाँ जाते हैं इकट्ठा करके रख लीजिए और घर में आपके वृंदावन में. You can put it in a nice container. Put it in your altar if you have altars already, and you can worship. Or some, the Brajavasis also, what they will do, if they will travel outside of Vrindavan, they will put some onto their head, some Brajaraj, and they will eat. So, हम वृंदावन वासी ऐसा करते हैं कि वृंदावन की धूली अपने जो आपके मंदिर है घर में उस पर रखते हैं और या कभी-कभी उसमें से एक कण अपने सिर पर रख लिया और कुछ खा लीजिए. But what is the most important that you can take away from Vrindavan is the spiritual energy that is here. Because this kind of energy, as we mentioned earlier, the vibration here, is so captivating. The bliss, the happiness that you receive from Vrindavan, you take away with you, lock it up in your heart. Bring it back to Mangalore. तो वृंदावन में जो आध्यात्मिक खुशी है, वो सबसे बड़ी चीज आप वृंदावन से ले जा सकते हैं. ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान के सेवा का जो संतोष, वो आनंद अपने हृदय में सबसे बड़ी चीज आप ले जा सकते हैं. But give little of what you have, what you experience from here to some of your friends and loved ones in Mangalore. जो आध्यात्मिक सुख आपको हृदय में प्राप्त हुआ है, वो अपने घर में जाके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बांटिए. The best way how to spend while you are here in Vrindavan is to hear and chant more the Hare Krishna Maha Mantra and read if you have books or in your smartphones in a Bhagavad Gita. This is the best way how you see, as we've heard from Krishna Kumar Prabhu, everything that we do in Vrindavan is multiply so much that we should treasure this and keep it with you, and as much as possible try to come back again to Vrindavan for a longer period of time, because how many days you were? 3 days? 4 days? 5 days? No, 5 days is not enough in Vrindavan. तो वृंदावन से प्रभु
ठाकुर जी यहाँ वृंदावन टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, आपको बोल रहे हैं वृंदावन को जरूर आइए, दोबारा आइए और ज़्यादा दिन के लिए रहिए। At least 1 month. At least 1 महीना। Then you can experience the real Vrindavan. तो जितना एक चीज़ बोलना भूल गए, वृंदावन में सबसे अच्छा चीज़ श्रवण कीर्तन। जितना नाम जप पढ़ सकते हैं, भक्तों का सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, बहुत शुभ। But we understand because of your responsibilities that you have back in Bangalore, it's very difficult to part with them immediately. Make your home Vrindavan. आपके बड़े-बड़े उत्तरदायित्व हैं, अब आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन में नहीं रह सकते, अपने घर को वृंदावन में परिवर्तित कर दीजिए। If the center of your life as Grihasthas is Krishna, and everyone is chanting Hare Krishna, all the family members, hearing Bhagavad Gita every day, offering your food to Lord Krishna, your place is not different than Vrindavan. अगर आपके घर में सब घर के सदस्य हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, तो आपका घर वृंदावन है। Vrindavan is change of consciousness from materialistic consciousness to spiritual consciousness, always thinking of Krishna and never forgetting Him. तो वृंदावन तो हमारे हृदय को परिवर्तन करने से प्राप्त होता है। आप भौतिक चीजों को सोचने की जगह कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। You have any question? किसी को कुछ प्रश्न है? Here, where is the best place to chant the Holy Lord? Anywhere, everywhere in Vrindavan. Of course, it's good to chant where you are not having any distraction. There's no... find a place. We have Goshala. Have you been to a Goshala? Yes? When? Yeah, coming to Vrindavan without seeing Gomata, Bhakti Swami, Goshala, is not complete. I would consider it is a failure, but you're going, so it is a success for all of you. It's nice to chant over there. It's very peaceful. And wherever you go, if you go to Govardhan, that's a nice place to chant. Go to Yamuna, that's a nice place to chant. Everywhere is a nice place to chant. सब जगह बहुत अच्छी जगह है। गोवर्धन जाइए या यमुना के पास जाइए, कृष्ण के नाम लेते हैं। Any other question? Yes, Mataji. More and more people start chanting. Can the Kalyug also be break or bring back to Satyam? Yeah. You understand her question? अगर ज़्यादा लोग जप करें तो क्या सत्य वापस आ सकता है? अगर नहीं आ सकता, कलयुग रुक सकता है, रिवर्स चल सकता है? हाँ जी, yes. 427,000 years more, Kali Yuga. We just passed 5,000, a little bit more than 5,000. And 500 years ago, Lord Chaitanya Mahaprabhu inaugurated the Sankirtan Yajna, the Yuga Dharma, chanting of the Hare Krishna mantra. Now, we just came back from Mayapur, Srila Mayapur, and we are offering this to Srila Prabhupada because he wanted to fulfill the prediction of the Acharyas, Nityananda Prabhu and the Acharyas, to have the largest temple built
in the last 1,000 years, temple of Vedic planetarium. So once that is built, which is we're supposed to inaugurate 2024, 2 years from now, that'll be a golden age, whereby for the next 10,000 years, the chanting of the Hare Krishna mantra will be heard in every town and village. Okay? And anyone who will partake into the Sankirtan Yagya, they will never be affected by Kali Yuga. जो भी हरिनाम का जप करेंगे उनको कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप लोग अक्टूबर में मायापुर आए थे, they all came to मायापुर in October. So आपने देखा है वहाँ अद्भुत मंदिर प्रकट होने वाला है। जैसे ही अद्भुत मंदिर प्रकट होगा, कलयुग का प्रभाव बहुत कम होने जाएगा। बिकॉज वो 1000 साल में इतना बड़ा मंदिर नहीं बना है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। तो it is with your help that it will be completed. So whatever you can offer straight from your heart, not from your pocket. Actually, they all So महाराज से मायापुर मंदिर को निर्माण करने में मदद करना आप लोग बहुत लोग पहले भी किया है। वो मंदिर प्रकट हो गई, कलयुग को रोक देंगे। Then everyone will be carried away by the Sankirtan Yagya, even if they don't want to be, to be part. They don't have any choice. तो किसी को कलयुग से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा, नहीं कलयुग का प्रभाव रुक जाएगा और गोल्डन एज से कोई बच नहीं पाएगा। It's like 500 years ago, 536 ago, when Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared, the Muslims, they were saying, because it was a lunar eclipse, and then everyone was chanting, Hari, Hari, Govinda, Govinda. And they're like in Ganga. Their body is submerged in Ganga. So the Muslims say, what's going on here? You're all chanting Hari Hari. Okay, we should also chant Hari Hari. So even the Muslims 500 years ago, they were doing it. But the prediction is, in every town and village, everyone will be chanting the Hare Krishna mantra. Then after 10,000 years, no more Hari Bol, Hari Bol. It's finished, it's gone. It'll be so degraded. Survival of the fittest. ये 10,000 साल का एक अवसर है और जैसे चित्र महाप्रभु 536 साल पहले प्रकट हुए थे, उस प्रकट होते समय क्योंकि पूर्णिमा था, सब लोग नदी में आपको नहा रहे थे और हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। तो मुस्लिम लोग भी उसका नकल कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं हरि हरि कृष्ण कृष्ण। तो सभी लोग कृष्ण का नाम ले रहे थे। तो ये जैसे संकीर्तन मूवमेंट बढ़ता रहेगा, सब लोग कोई बच नहीं पाएगा, सब कृष्ण का नाम लेते रहेंगे। लेकिन 10,000 साल बाद सब खत्म। So take advantage to have this prediction be fulfilled. Be serious, be sincere in chanting the holy name. Read every day Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Make your life perfect, successful. हरि बोल। तो महाराज की आप सबसे विनती है, हर दिन हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, भगवद गीता को पढ़िए, भगवान की सेवा करिए और इस मनुष्य जीवन को सफल बना लीजिए। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you very much. हरे कृष्णा। So we ended up here now. I wish you all the best in your spiritual life and hope to see you again when you come back in Vrindavan. Yeah, well, if you can do it, 1 month. So महाराज बोल रहे हैं बहुत बहुत खुशी है आप सबको वृंदावन देख के और विनती है कि दोबारा वृंदावन आते रहना और नेक्स्ट टाइम लंबे टाइम के लिए आना। इस होली ने भक्ति अनुग्रह जनार्दन